Welcome back, dear students. Thank you very much for joining me again in the third episode, जिसमें हम tools discuss कर रहे हैं. And the third tool which we are going to discuss is the crop tool. Crop tool क्या करता है? When you compare this crop tool with the Photoshop or any other, it is pretty much different to others. Photoshop में what was happening कि हम किसी भी एरिया को crop करते थे, वो पूरे के पूरे कैनवस को क्रॉप कर देता था. वेयर एज इन कोरल ड्रॉ इट्स नॉट लाइक दिस. आपने कोई भी एरिया सेलेक्ट किया एंड लेट मी सेलेक्ट दिस एरिया एंड प्रेस enter, and here we go. As you can see, the area which comes under this box, that will be cropped. So let me undo this and escape, and let me undo, sorry. Okay, here we go. So that is simply the crop tool. आप चाहें तो इस वाले को पिक करके और इतना क्रॉप कर दें, right? And you press enter. Either go with the clear crop, means कि you're not interested, and again let me pick and जल्दी से जाके इस वाले एरिया को पिक करें and you press enter. And sorry, the selected area was wrong one. ये selected था, select इसको करना है, then you have to pick uh, the crop tool and press enter. As you can see, the inside area जो कि उसके अंदर था, that is available, and remaining will be wipe out, that will be cropped. Let me undo this, and that is the very basic shape of crop. Acha, knife is exactly like slice tool in Adobe Illustrator, and the crop tool की further option in the Photoshop. यहाँ पे क्या हो रहा है? So you have to select this one and you have to select this one as, and that's it. You selected one corner and the second corner. Here is another one. Here is another one. अब आप चाहें इसको further, you can just crop it like this. आप यहाँ पे click करें and yes, straight away comes to the center point of this. Click here and pick the tool, and as you can see, we have divided this one shape into 1, 2, and 3 further parts. So that is one of the most recommended as well as the important tool to understand. Then इसके बाद the next under this is the eraser tool. As you all know, eraser is pretty much simple. आप जाएं तो किसी भी चीज को यहाँ से जाके उसका size erase करें and select an object first. Okay, again I made a mistake. Let me select the object first, and then उसके बाद we will erase the tool. इस तरीके से यू कैन इरेज द आउटसाइड के जो एजेस हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता आप इरेज करना शुरू कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट मी गो मैनुअली एंड थोड़ा थोड़ा मैं इसको इरेज करता जाता हूँ, और एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू इरेज एनी ऑफ द थिंग. सो यूजुअली दिस टूल डजंट रिक्वायर्ड एज सच, हमारी इतनी इसमें ये नहीं आता, लेकिन समटाइम्स द रिक्वायरमेंट कम्स कि आपको इरेजर की ज़रूरत पड़ती है इनटू सॉफ्ट काइंड ऑफ. जब आप कलर्स की तरफ जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज आई सीरियसली डोंट थिंक कि इसकी एज सच कोई यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा है. अदरवाइज अगर आपने इरेज करना है तो यू जस्ट प्रेस द डिलीट की एंड दैट विल बी इरेज्ड और वाइप आउट. करेक्ट. इसके अलावा देन देयर इज अनदर वन इज द वर्चुअल सेगमेंट. वर्चुअल सेगमेंट बेसिकली क्या करते हैं, वर्चुअली उसके कुछ ना कुछ सेगमेंट क्रिएट कर देते हैं, बट एज सच इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. लेट मी गो एंड अगेन गिव यू द अदर ऑप्शन विच इज रिलेट्स टू द नेक्स्ट ऑप्शन इज द जूम ऑप्शन. जूम ऑप्शन क्या करता है, अगर आपने किसी भी एरिया को जूम करना है, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट जूम and select the area. And shortcut key for this, as I told you earlier, the F2 is for the zoom. Right now it is the other tool which is selected, for example this tool, and as soon as I press F2, the cursor is going to be changed. As you can see, I'm revolving this my cursor, and as soon as I press F2, here is
the circle that has been changed to this. So you can zoom in किसी भी point, किसी भी area को, for example I am interested to zoom in like this, और इतने से एरिया को आप फर्दर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो समथिंग विच यू कैन वेरी इजीली डू विद द हेल्प ऑफ दिस जूम टूल. अच्छा जी, जूम टूल करने के बाद हाउ कैन यू रोल बैक. F3 is the opposite exactly to that. तो आप F3 प्रेस करते जाएंगे फॉर एनी टाइम्स, फॉर मैनी टाइम्स, जितना भी आप करना चाहें, एंड ये जूम आउट होता जाएगा. एंड द F4 की, एज आई मेंशन अर्लियर, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्ट बोर्ड के ऊपर विजिबल हैं, ये उन तमाम को जूम कर देगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो या इसकी एक कॉपी पड़ी हो किसी इस ऐसी जगह के ऊपर, एंड F4 से पहले ये हुआ था, नाउ आई प्रेस F4, तो ये ऑटोमेटिकली इस एज को और इस एज को सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर देगा. राइट. सो इसके अलावा the pan tool is the most important in case if you are interested to pan in between one page from one object to another, and instead of moving here and there again, that is another option जिसके थ्रू आप बहुत easily move कर सकते हैं from एक ही पेज के रहते हुए in between from one object to another object. For example मैं zoom in किया हूँ, and you can do it like this way. So this is a very basic and very important tool which allows you to move and further. इसके अलावा दी प्रॉपर्टीज पैनल, जिस तरह हर टूल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ये सारा कुछ अवेलेबल है. यू कैन जस्ट क्लिक हेयर एंड हेयर आर द फर्दर ऑप्शंस. आप इसको कितने परसेंट पे जूम करना चाहते हैं. टू फिट मींस कि जो कुछ F4 के साथ हो रहा है वो टू फिट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा. एंड टू पेज मींस पूरा का पूरा पेज जो भी आपने क्रिएट किया था इनिशियली, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको ओपन करने में, तो यस क्लिक हियर एंड टू पेज. टू विड्थ मींस कि जितना पेज की विड्थ है दैट विल बी विजिबल. एंड देन सेम गोज टू ऑल अदर. फॉर द हाइट मींस टॉप से और बॉटम से वो उसको पूरा का पूरा फिक्सन कर देगा. फर्दर यू कैन यूज दिस कमांड, जूम इन, जूम आउट एंड जूम द सिलेक्टेड एरिया, एंड ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं फर्दर आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन देयर इज अनदर कमांड विच इज लाइक, आप इसको सिलेक्ट करें एंड प्लस शिफ्ट प्लस F2 मींस जो भी सिलेक्टेड एरिया है वो जूम हो जाएगा. आई होप यहां तक बात होगी क्लियर. सो इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक टिप्स, बेसिक टूल्स की मदद से यू कैन स्टार्ट योर क्रिएटिव वर्क. विद इन दीज कपल ऑफ लेक्चर्स में हम ये बेसिक सारे के सारे टूल्स अपने फिनिश कर लेंगे, एंड देन उसके बाद वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग न्यू एंड न्यू शेप्स. थैंक यू वेरी मच.